वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका पेपर क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज की हमारी जो वीडियो है वो एमएस वर्ड की है। एमएस वर्ड की जो हमारी सीरीज़ थी उसी की वीडियोस को भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं एंड आज की हमारी जो वीडियो है वो एमएस वर्ड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड यूजिंग द रिबन वेयर शुड यू गो टू एक्टिवेट द रूलर ऑन योर डॉक्यूमेंट। ऑप्शंस आर व्यू टूलबार, फाइल, ओपन, व्यू, रूलर, इंसर्ट, प्रेफरेंस। नाम से ही पता चल रहा है हमें रूलर को ऑन करना है और जो ऑप्शन है उसमें हमें रूलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है और रूलर ड्राम का वर्ड दिख रहा है और जो ऑप्शन सी में है। चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज व्यू रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट मैप। व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट मैप, मतलब डॉक्यूमेंट मैप का क्या यूज है। To quickly format the document, to quickly print required document or required page, to quickly navigate the document, to quickly correct spell check or to quickly correct spelling check mistake. So I think it's option C next, and the correct answer is the quick navigation the document, to quick navigation the document. Question number 3, the main element of the dash are the instruction point, end mark, house pointer, rulers, scroll bars and status bar. Word toolbar, formatting toolbar, Word document window, graphics toolbar, and the correct answer is Word document window. Question number 4, before moving a sub-document to another location within a master document, you must switch to dash, normal view, outline view, web layout view or print layout view, and the correct answer is outline view. Question number 5, how many margins are there on a page? 2 header and footer, 4 top, bottom, left and right, 2 landscape and portrait, 4 center, top, left and bottom, and the correct answer is 4 top, bottom, left and right. Option number B. Question number 6 is, when a hyperlink is created, Word format the web address as dash, and the correct answer is underlined and colored blue, right? Question number 7, Superscript, Subscript, outline, emboss, engave are known as font style, font effects, word art or text effect, and the answer is font effects, right? Question number 8, shimmer, sparkle text, blinking background etc. are known as font style, font effects, word art, text effects, and the correct answer is text effects. Question number 9, bold, italic, regular are known as font style, font effects, word art, text effects, and the correct answer is font style. Question number 10, which feature is used for monitoring all document changes? Edit document, monitor document, track changes, track all, and the correct answer is track change. बेसिकली हम मॉनिटर कैसे करेंगे? ट्रैक चेंज के थ्रू हम डॉक्यूमेंट की जो भी चेंजेस हैं उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होती है।